light on the car. Books ले ली मैंने पढ़ी है। क्या नाम क्या है? मुझे कुछ उसके मार्शल ग्रीन कलर के कहाँ है? ये थोड़ी बड़ी Yes, good job. लेंस एल होता है टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड का मैच होता है थोड़ा ही होता है बड़ा तो चार सीरीज तो वॉल्यूम में क्या लिखा है बड़ा नहीं वॉल्यूम की बात आ गया डिराइव क्वांटिटीज क्या है वॉल्यूम क्या है ड्राइव क्वांटिटी को क्या इसमें ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को मत करना से वो लेंथ पर हाइट वॉल्यूम अच्छा अगर स्पीड की बात करें तो फंडामेंटल हाँ है स्पीड फंडामेंटल नहीं स्पीड बहुत ड्राइव है उससे मीटर और टाइम ड्राइव फंडामेंटल क्या फंडामेंटल और टाइम होगा खुद ही मतलब ऑर्गेनिक होता है खुद ही बना खुद ही है क्वांटिटी अच्छा फंडामेंटल में इनको करना तो फॉर्मूला से लगता है ड्राइव हाँ फंडामेंटल का तो टाइम ड्राइव नहीं टाइम जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू पीपल गुड शाबाश दो से दो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा कैसे हैं आप ठीक सर और आप? अल्लाह का शुक्र ऑलराइट yesterday we were talking about and we discussed speed कर लिया speed का दिया ना वो करना वेलोसिटी all right so when we say speed that means distance covered by any moving object in a particular time. And we talked about that speedometer which is there in the car. As I let's suppose there are 2 points, point A and point B. Car is moved on this road with different speeds. All right? Yeah, Hussain is there. How are you, Hussain? All right, good. Good to see you. So, yesterday we just talked about the speed. I'm just continuing from there. There are 2 points, point A and B. These can be 2 places. All right? A car is traveling on this road and it travels some distance it travels let's suppose for 60 kilometers per hour for 30 minutes. Then its speed changed, speed up, and travel with speed of 80 kilometers per hour for another 2 hours. In between, over here, the car break the journey for 30 minutes, stopped.
ठीक है? So my question is, how long the car took to travel from city or point or place A to B? Yeah. G. Yeah. शाबाश 3 hours. ठीक है? Yes or no? 2. What was the maximum? Minimum speed of the car? So maximum 80 kilometers per hour, minimum 60. Okay, maximum was 80 kilometers per hour and minimum was 60 kilometers per hour. Do you all agree to it? Yes or no? Yes, moving speed. Yeah, the speed. G, Alvina. Maximum 80. Maximum? Minimum? Yes, ये होगा sir. Minimum 0 minimum. Minimum 0 है. It stopped here for 30 minutes. So the minimum speed is 0 kilometers per hour. Okay? Got it? Now, third question, number 3. Can you find the total distance it travels in 3 hours? Yeah. All right, calculate and tell me. What is the total distance traveled by the car? 190 kilometers. Okay, somebody had 190 kilometers. Anybody else? Any other answer? इर्तज़ा 190, एक और 190 आ गया जी अब्दुल्ला पक्की हुसैन what do you think? Can't hear you. All right, Amina. Teacher, can you hear me now? What is the total distance traveled by the car? Yeah, what is the distance between point A and B? Sir, 190 km divided by 60 होगा. 190 divided by 3 multiplied by 60 होगा. क्यों? 190 by 160 क्यों होएगा? आप calculate, just calculate it and tell me your answer. Somebody told me 190 kilometers. I'm not very confident that it's 190 kilometers. All right, let's see. Okay, if the car is moving from point A till this point with a speed of 60 kilometers per hour for 30 minutes,
How much distance it has covered in this region? So we have Shabash, the formula, speed is equals to distance over time. So we are going to calculate the distance. So make D as a subject. So T will be multiplied with S. We'll have T into S is equals to distance, or distance is equals to T into S. All right. Now let's put the values here. Time is 30 minutes and the speed is in hours. Either we have to convert this thing into hours or this kilometer per hour into kilometers per minute, because both the units, they are not same. Before yesterday we talked about the units, so we have to make the similar units. So do you want to convert it into hours or this thing into minutes? Hours, okay. 30 minutes is how many hours? Half. Half an hour. Okay. So 30 minutes or 0.5 hours. So 0.5 into what is the speed? 60. How much distance? 30 what? Kilometers. So car has covered 30 kilometers here. How much distance it has covered when it was stopped? Good. No distance. Zero distance. Can you do it for this part by yourself? How much? 160. 190. The car was traveling at a speed of 80, right from this point till the end. Okay? Do you think its speed changed from this point to point B, or it remained 80? No, this point, from this point onwards, it remained 80. So can I say that the car is moved at a uniform speed? Of 80 kilometers per hour, uniform speed. Okay, same, which is not changing from this point till B, and it covered 160 kilometers. So altogether, the total distance 190. Good. Gialmina, you got that? Yes, sir. Excellent. Any questions? All right. What about this first part? When the car was traveling at a speed of 60 kilometers per hour from point A till this point, wasn't it moving with a uniform or same speed? Yes, it was. And then it stopped, and then it again. So, can I find its average speed? Average speed is equals to total distance over total time. What is the total distance it has covered? 190. 190. Shabash. And what is the total time taken by the car? 3 hours. 3 hours. Shabash. So altogether, what is the average speed? 64. Average speed is 64. 63.33 kilometers per hour. Now, this average speed is not
anywhere during this journey. Okay? So average means total, the sum of total divided by the number. So it can be the part of it or it can be a different one. Okay? So average speed which we obtained is 63.33 kilometers per hour, which is obtained from dividing the total distance with total time. So what we understood from this example is uniform speed and average speed. Any questions? Any ambiguities or things which are not clear to you, please ask me. Okay. I'm sure you understand the speed now, it's clear. We are just moving on to velocity. G. When we say velocity, what is the first thing which comes to your mind? So velocity is, matlab, it's just like speed, but unlike speed, it's displacement over time. Is the Speed, displacement? which is displacement over time. Shabash Alvina, this is her point of view. Anybody else? Rate of change of the displacement. Rate of change of the displacement. Rate of change of displacement. Okay. Two brave people in my class, they have responded. What about the others? Whatever you think, share that with me. Whether that is right or wrong, no issues. Ji Adil Abdullah. Hussain. No idea about velocity? Yeah, hai. नहीं बताना. All right. You want to share? Okay, no issues. All right. Speed is actually distance over time, right? So, what is the difference between distance and displacement? Another day we have just read the similarities between the two. They got the same units, almost same meanings, but still they are different from one another. What is that difference? So it's different, shorter slope as a farmer's. All right, Shabash. It's different in shortest distance. Displacement is the shortest distance. All right. And how it can go up one point From one point to another straight in a particular direction. Yes, Shabash. In simple words, the difference is between the two is direction. Displacement is the distance in a particular direction. And this distance, yeah. So displacement, when it is in a particular direction, it is the shortest distance also. So the only difference between the two is direction. Displacement has the direction, whereas distance can be any irregular motion, right? Motion of a butterfly
It's not regular. So it is covering displacement or distance? Distance. Distance. The motion or the flight of an aeroplane. This is what? This part is displacement because it is in a straight line. So direction makes the distance as displacement. Same is the difference between speed and velocity. Velocity, when we have displacement over time, instead of speed, we call it velocity. Okay? Alvina, you are absolutely right that speed with direction is called velocity. Or velocity is equals to displacement over time. Okay? Now, Irtaza, he has stated the definition of velocity, rate of change of displacement. Oh, very technical stuff. Rate. I'm just underlining these technical words which got meanings and you need to know them. Rate of change. When we say change, what do you mean by change? Badlav. Badlav, okay. Or what else? Difference? Okay. I'm just writing the meaning of change here. Difference or difference or alternate. Badlav means alternate. Okay, that is change. Let's suppose I have two sticks. One stick with a height of 1.5 meters. The other stick with a height of 1.25 meters. What is the difference in heights of these two sticks? 0.25. So difference means addition or subtraction? Yes, we find the difference by subtracting the two quantities. All right. Over here, what we did when you were asked to find the difference in the height, you simply subtracted the smaller one from the bigger one, and you got the difference. If I ask these two, what is the difference in your heights or your ages? Simply you are going to subtract that. Okay? Let's suppose you went to the shop and you bought a packet of Lay's chips. All right? You just gave the shopkeeper a note of like 50 bucks, rupees or whatever that is, and the price was 30. How much change you are going to get back? So you are going to subtract that from the note. All right? So change means difference. So whenever this word comes in the statement, change, you should know that we are going to subtract the things. All right? The symbol for change is delta. This is a symbol. Okay? Rate. What do you mean by rate? जी रेट का मतलब
difference means change is minus G. Anybody? Sir, कोई मतलब measuring or quantity? Okay, good. When I say, what do you mean? That means you have to reply. I'm not looking for the correct answer, but you have to share whatever you are thinking with me. Okay? So at least I'm sure you are thinking when I ask you something. So share that thing. So rate का मतलब होता है नहीं आता तो याद रखना. If you don't know, then please remember it. Rate का मतलब है rate is divided by time. Rate means divided by time. You see these definitions, they are very technical. All right, scientists, they have spent their lives to discover and state these terminologies. So they have specific meanings. So if you just know them, then it will be very easier for you to comprehend that statement. Okay? Rate means you have to divide something with time, always. Okay? So if you got the meanings of rate and change, let's see how we can interpret it. I'm just now writing it with red. Rate of means you have to divide something with time. Divided by time. Rate of, हो गया. Change of displacement. Change of displacement means difference between the two displacements. All right. So if we say D2 and D1, okay? Displacement, final displacement minus initial. That is time divided by time. Okay? चलो ठीक हो गया. Another way of interpreting is change of displacement. Rate of change of displacement. Rate of change of displacement is velocity. ठीक है बेटा? So this is the formula or relationship of velocity. Noted down. ठीक हो गया? Now if I say, what is acceleration? Anybody knows the definition of acceleration? Sir, change in velocity. The change in velocity. Change of velocity or sorry, it's just the change of velocity or it has something to do with time also. What is that definition? All right. Yeah. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. Okay, let me write it. Rate of change of velocity is acceleration. So acceleration is equals to rate means what? इधर देखो please. Divided by शाबाश. Change in velocity. Change is delta. Delta V. Is it right? Delta V means if initial velocity is denoted by U and final velocity
ऑनलाइन था हाँ 3 2 बच्चे थे। आर्यन आदिया नहीं, आदिया नहीं थी, अलवीना थी और हुसैन था। हुसैन का क्या काम है जॉर्जिया, मुझे तो कोई और होना चाहिए था, रॉबर्ट या और कोई ऐसी चीज। जॉर्जिया से ठीक है ये तो है, अब वो लोग आ जाए तो शुरू है, तो उसको उर्दू भी समझ आता है। इसीलिए अंग्रेजी बोलनी पड़ती है उसके लिए। हम लोग को समझ आ रहा है ना हमारा, मुश्किल तो नहीं है ना, हम श्योर कोई नहीं। हाँ वो हम जो अपना हंसी मजाक बीच में करते हैं ना, वो नहीं हम कर सकते उसकी वजह से उसमें क्या है, पता नहीं मुझे ही कुछ कह रहे हैं शायद। चलो यार वो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक हो गया जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ए स्मॉल जो सिंबल है दैट इज स्मॉल ए, ओके, दैट इज इक्वल्स टू rate of change. Rate means divided by time, change means delta v, तो v minus u, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा, एक्सेलरेशन भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया। अब वही वाले लफ्ज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी का क्या मतलब है? अनचेंज वेलोसिटी, शाबाश, वेरी गुड, कांस्टेंट, सेम जब भी जा रही है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहना होता है ना सब, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सब सबकी नीली पैंटें हैं जैसे, व्हाइट शर्ट्स हैं जैसे, उसकी यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मींस सिमिलर, सेम, एक जैसा, अनचेंज। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? शाबाश, जो चेंज होती जा रही है, कभी कुछ है थोड़ी देर के लिए होगी। मोटरवे पे हम जाएंगे तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म किसी वक्त हम रुक भी जाएंगे, स्पीड भी पकड़ रहे होंगे, फिर हम यूनिफॉर्म से भी जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो एंटायर जर्नी जो होगा, टोटल जर्नी नॉन यूनिफॉर्म पे बेस्ड। अच्छा, एक्सेलरेशन भी इसी तरह से आती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेडी, अनस्टेडी। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पीड की बात की थी, लाहौर से इस्लामाबाद हम अगर छोटे छोटे बिट्स में इसको ब्रेक कर लें तो आपकी वेलोसिटी जगह जगह डिफरेंट आएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से हम सारी एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी एज इट इज अप्लाई हो जाती है। असल में एक्सेलरेशन क्या है? ये नहीं है, ये तो हमने लफाजी में समझा है ना, असली एक्सेलरेशन लाइफ में क्या है? इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक। अब यहाँ पे हुसैन शायद ना समझ सकता तो अच्छा होगा, वो नहीं आया। मोटरसाइकिलें चलाई है ना हम लोगों ने कि नहीं चलाई? जिंदगी में चलाई, लेकिन गाड़ी चलाई है तुमने, क्या साइकिल चलाई? अच्छा, ठीक हो गया। मोटरसाइकिल पे बैठे तो हो ना, ये वाली साइड को क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर। और ये ब्रेक नहीं, क्लच होता है, ये ब्रेक नीचे है फॉर्म है, ये वाले फॉर्म है, इधर गियर होता है, ठीक है बेटा। अब गियर लगाया, क्लच छोड़ा और रेस दे दी मैंने, ऐसे एक्सेलरेटर यूं दबा दिया, क्या होगा? ऐसे जाओगे, स्पीड होगा कि नहीं होगा? तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? उसकी स्पीड क्या होगी? ये है रियल लाइफ। गाड़ी में भी पहला जो पैडल होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर। चाहे ऑटो है चाहे मैनुअल है, दोनों में पहला पैडल जो है ना राइट साइड वाला, वो एक्सेलरेटर, उसको ऐसे प्रेस करोगे गाड़ी क्या करेगी? एक्सेलरेट हो जाएगी, यानी चेंज इन स्पीड आएगी। स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। तो जब कभी भी इंक्रीज होएगा तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट हो रही है। अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, अब वो एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो। समझ आ रही है बातें? ये है असल में एक्सेलरेशन। अब तुम जा रहे हो 120 की स्पीड पे, ऐसे मोटर नींद भी आ रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? स्लो।
जब डिक्रीज होती है तो उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। डिसलरेशन भी कहते हैं लोग, मैं उसको डी एक्सेलरेशन कहता हूं, या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्लो होने वो एक्सेलरेशन का नेगेटिव है, ऑपोजिट है। गोइंग राइट साइड इज पॉजिटिव, तो गोइंग लेफ्ट साइड विल बी नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन मींस इंक्रीज इन स्पीड इज पॉजिटिव, तो डिक्रीज इन स्पीड विल बी नेगेटिव, और उसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, समझ आ गई? एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों समझ आ गई? गुड हो गया। और कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, सोचो जरा, गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी स्पीड कैसी होगी? हर सेकंड में क्या होती जाएगी? जैसे स्पेस शटल ऊपर जा रही है, ठीक है, यहां से काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, 5 4 3 2 1, अब उसकी स्पीड तेज होती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यानी हर सेकंड के बाद स्पीड इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज, ऐसे ही है ना? शाबाश। तो उसमें अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसका क्या मतलब है? तो एक सेकंड बाद एक सेकंड के बाद जितनी पहले सेकंड में इंक्रीज हुई थी उतनी ही अगले में होगी। लेट्स सपोज पहले यहाँ पे 0 थी, 1 हो गई, अब 1 के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाए? 2, यानी उतना ही। अब 1 से 2 हुई है तो अगले में 2 से 3 हो जाए, हर सेकंड में उसकी स्पीड एक इंक्रीज होती जा रही है। इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम इसको कहें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो अब स्पीड कैसी होगी उसकी? जबरदस्त इंक्रीज होगी। हाँ जी, पहले 0 से 1 पे गई, फिर 1 से जब आगे जाएगी अगले सेकंड में तो 1 से 2 नहीं जाएगी, 1 से 3 हो सकता है, फिर उससे अगले सेकंड में 3 से 4 नहीं या 5 नहीं या 6 नहीं, वो कुछ और ही है, और से और तेज होगी। ठीक है समझ रहे हो? तो ये था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड। यहां तक क्लियर है सारी बातें? अब ये दोनों लोग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे सवालों जवाब के लिए इस सेशन को रोक रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको ये बातें भी ना समझ आएंगे और अगली भी ना आएंगी तो ये फारग हो जाएंगे। ठीक है, चलो हमने आप आगे पता है क्या पढ़ना है? कल का मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करूंगा और इसकी एक्सटेंशन आगे लेके जाऊंगा। मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस करवाऊंगा, उसके सारे सिंबल्स करवाऊंगा ताकि आपको पता हो कि इसका मीनिंग क्या होते हैं। इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज के सिंबल्स आपको बता दिए, एक्सेलरेशन का बता दिए और डिस्प्लेसमेंट का बता दिए, वेलोसिटी का बता दिए। ठीक है, हम उनको यूज करते हुए कल इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। अगर आज ये हमारे साथ होते तो आज ही हम यहाँ तक कंप्लीट करते इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन थोड़ा सा ये रिकैप हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, हमने मोशन के ग्राफ्स करने, जैसे वो नहीं स्पीड टाइम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, वैसे ग्राफ प्रूफ बनाते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं, वो वाले करने हैं हमने कल। ठीक है, कल का हमारा एंड सेशन तक वो टारगेट है कि वो ग्राफ्स आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, कोई सवाल यहां तक? ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? चलो आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग 5 मिनट्स पहले ऑफ कर रहे हैं। अगर कोई सवाल पूछते हैं तो पूछ लो, आई एम हियर।